माय चैनल। और आज है सैटरडे, इट्स अ ब्राइट सनी डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ लाइप्जिग। सो यहाँ ड्रेसडेन से सीधा एक ट्रेन है जो कि लाइप्जिग जाएगी। सो वी आर एंजॉइंग द मंथली टिकट विच इज़ ऑफ 9 यूरोज़। सो इन जर्मनी टूरिज़म के लिए, जैसे मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था, so there is a 9 euro ticket and in that ticket you can explore entire Germany, so you can use regional express. So our train is there in 15 minutes and I will keep you updated. So nowadays I am planning to shoot more videos, be more consistent on YouTube and deliver awesome content for you guys. Just stay tuned and just suggest me what you want for the next upcoming videos. Do you want travel vlogs? Do you want information about Germany, or do you want information about studying in Germany? Let me know in the comment. So friends, we are here in Leipzig mark. As you can see, weekends पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है and to our surprise there is some concert held in the evening. हम तो मुश्किल से इंग्लिश गाने सुनते हैं, तो जर्मन तो सवाल ही नहीं है। So let's cover some interesting facts about Leipzig. Leipzig का जो हाउटबानहोफ है, मेन ट्रेन स्टेशन, it's the largest train station in Europe if you consider it like floor wise. So काफ़ी बड़ा है Leipzig का जो हाउटबानहोफ है. Apart from this, Leipzig is the most densely populated city in the state of Saxony. So ये कुछ interesting facts है Leipzig के बारे में. So our cameraman is getting ready. So friends, we are here at St. Thomas Church. So it is one of the ancient churches in Leipzig. So ये पूरे चर्च को मैंने एक ही शॉट में कैप्चर किया है, एज यू कैन सी. एंड यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ऑफ कोर्स जर्मन और इंग्लिश दोनों में. आप आराम से, अगर जिसको इंटरेस्ट है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ होल चर्च. और ये एंट्रेंस है. दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो, दिस इज़ अ स्टैचू ऑफ मिस्टर जोहान सेबेस्टियन बाख, हु वाज अ जर्मन म्यूजिशियन एंड कंपोज़र. सो इसका स्टैचू यहाँ पे क्यों है? क्योंकि he was buried here in front of
this church, St. Thomas Church, and इसीलिए ये एक स्टैचू है इसका. सो अभी जो आपने स्टैचू देखा मिस्टर योहान बाख का, he was born in the year 1685 and he died, he was buried here in the year 1750. So ये एक बहुत ही फेमस जर्मन म्यूज़िक कंपोज़र थे, इसलिए इनका स्टैचू यहाँ पे लाइप्जिग में इन फ्रंट ऑफ द चर्च, यहाँ पे इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू है. So friends, now we are here at the Battle of Monument of Nations. So ये जो है, this is a very famous monument in Leipzig. This monument was constructed in the year 1913 in the memory of 100 years of completion of the battle and 100 years to the victory of Germans over French. So this is how the monument looks like. It's a very tall monument. Approximately, I can say, like a 15-storied building. Acha. This is just my guess, but yeah, in camera you cannot figure out how large or how big it actually is. And this is the surrounding. Very quiet place. बहुत अच्छी तरह से धूप निकल आई है. This is what the monument looks like when you come near to it. This monument is also called Leipzig Napoleon Monument. here at the Museum of Fine Arts. ये बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है लाइप्जिग में एंड हम अंदर जा सकते हैं लेकिन शूटिंग नहीं कर सकते. कुछ फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं लेकिन वीडियो शूटिंग इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाऊंगा आपके लिए. और बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम है, बढ़िया स्कल्पचर्स और फाइन आर्ट्स. जिनको आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इट्स अ मस्ट विजिट व्हेन यू कम इन लाइप्जिग. So it's a beautiful museum and it's overall a very good experience. So इस म्यूज़ियम के लिए एंट्री टिकट है जो कि है 10 यूरोस. सो गाइज ये जो म्यूज़ियम है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम्स इन जर्मनी. और ये जो म्यूज़ियम है इसमें मोर देन 1 लाख आपको फाइन आर्ट के पीसेस मिलेंगे. सो स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, फाइन आर्ट्स. सो आपको एक दिन भी कम पड़ जाएगा. सो आप अच्छे से आराम से आओगे तो आप देख सकते हैं. इट्स लाइक यू कैन टेक एन एंटायर डे इफ़ यू फील सो, इफ़ यू आर दैट मच इंटरेस्टेड. सो हमने तो जस्ट कुछ सेक्शन कवर किया है एंड हियर आर द फोटोज़ ऑफ द सेम. दिस म्यूज़ियम वॉज डायरेक्टेड बाय स्टेफान विपलमैन and this was constructed or established in the year 1848. So that's it for today. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखना. मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.